Hello friends, welcome to our new video. Let's try to solve the today's problem. Okay, so the today's problem is Newton hates balloons. Okay, so let's try to solve this. Okay, so here we have given a problem statement. The problem statement is there are n balloons placed on a number line. Newton doesn't like balloons, so he wants to burst exactly k balloons. So the ith balloon is placed on the coordinates xi. Okay, here xi is less than x2 is less than up to xn. Okay, initially Newton is at coordinate 0. Okay, and in a single second he can move from coordinate c to either c minus 1 or c plus 1. Okay, so Newton doesn't like to waste much of his time, so find the minimum time needed to burst k balloons. Okay, so in input, we in first line we have given the two integers, that is n and k, and the next line contains n integers, that is x1, x2 up to xn. Okay, these are the constants for this problem. Okay, and we have to print the minimum time needed to burst the k balloons. Okay, so and here you can see that here is sample input and output for this problem. Okay, okay, and here you can see that Newton would first burst the balloon at minus 10. Okay, then 5 and at 20. Okay, so the total time to take 10 plus 10 plus 5 plus 15. Okay, equals to 40. Okay, so these are the sample input and output for this problem. Okay, so in this problem, what we can do? Okay, so we have to print the minimum time needed to burst the k balloons. Okay, so to solve this problem, let's try to understand how we can solve this problem. Okay, so to solve this problem, what we can do, let's suppose first हम input लेंगे user से. Okay, input, that is n and k. Okay, ये दो नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे. ओके, उसके बाद एक एरे भी यूजर से इनपुट करेंगे. ओके, देन हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मैक्स वेरिएबल. ओके, उसको मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे, मैक्स वैल्यू. ओके, सो नाउ आफ्टर दैट हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये एरे है, दैट मीन्स ये ith एलिमेंट्स हैं. ओके, सो ये ith एलिमेंट्स हमको क्या करना है, i प्लस, हम क्या करेंगे पहले i प्लस k विच इज दिस वन, एंड इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे. ओके, ओके, सो पहले हम जो एरे है, एरे के उसमें क्या करेंगे, जो आई है एरे, एरे के जो एलिमेंट्स हैं, ये आई एलिमेंट्स, उसमें हम के को प्लस कर देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे. ओके, एंड इसका जो भी रिजल्ट आएगा, हमें क्या करना है, जो आउटपुट है हमें वो इंटीजर में चाहिए. हमें आउटपुट वो निगेटिव में नहीं चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैथ का फंक्शन एबीएस फंक्शन यूज करेंगे, so that it will return the positive integer number, positive number. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेट सपोज इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे. या तो आप इसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको दूसरे फंक्शन में भी हम पास कर सकते हैं. ओके, सो लेट सपोज इसको हमने abs1 वेरिएबल में स्टोर कर दिया, इसके रिजल्ट को. नाउ हमें हमें क्या करना है, और एक abs फंक्शन हम लिखेंगे, और उसमें हमें क्या करना है, जो ये एलिमेंट्स हैं एरे के, दैट इज एरे के जो आई थे एलिमेंट्स हैं उसमें, और अभी जो ये abs1 है, या फिर ये जो फंक्शन है एरे ऑफ i प्लस
k -1। ओके, इसमें से हमें क्या करना है, एपीएस वैल्यू मतलब फाइंड आउट करना है, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू हमें इस फंक्शन में से नहीं रिटर्न करनी है। ओके, सो एंड लेट्स सपोज इसको भी हमने ABS2 में स्टोर कर दिया। ओके, या तो आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ये सबको एक ही मतलब स्टेटमेंट में इस सबको लिख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, अभी हम क्या करेंगे, जो हमने ये दोनों ABS फंक्शंस हैं, ये वाला और ये वाला, उसमें से हम मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे अभी। सो फॉर दैट हम और एक मैथ का मिनिमम फंक्शन है मैथ डॉट मिन, वो यूज करेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, दैट इज ABS1 एंड ABS2 जो है उसमें से मिनिमम वैल्यू हम मिनिमम वैल्यू को हम लेट सपोज इसको कोई भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे हम। लेट सपोज टेम्प वेरिएबल में इसको इस मिनिमम को हमने स्टोर कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये जो टेम्प वैल्यू है, ये जो टेम्प वैल्यू हमने है, इसको हमें ऐड करना है। सो हम लिखेंगे टेम्प प्लस इक्वल्स टू, इसको किस में ऐड करेंगे हम, यहाँ पे और एक ABS एब्सोल्यूट वैल्यू हमको निकालनी है, किसमें, दैट इज एरे ऑफ आई, जो कि एरे के एलिमेंट्स हैं ये वाले, उस वो, और जो यहाँ पे ये जो ये है एरे ऑफ आई प्लस के -1। ओके, इसमें से हम ABS वैल्यू जो भी रहेगी इसकी, उसको हम ये टेम्प में ऐड कर देंगे। ओके, नाउ एक्स अरे ऑफ आई। ओके, इसको क्या करेंगे हम, ABS वैल्यू इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज एरे के जो एलिमेंट्स है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, सो एंड उसको हम टेम्प में ऐड कर देंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे अभी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट सपोज इफ की कंडीशन लिखेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने मैक्स वैल्यू डिक्लेयर की थी यहाँ पे, जो आंसर मैक्स वैल्यू चेक करेंगे, वो इफ आंसर इज ग्रेटर देन 10। ओके, देन व्हाट वी कैन डू, देन हम सिंपली आंसर को टेम्प को आंसर में स्टोर कर देंगे। ओके, एंड एट द एंड हम क्या करेंगे, और आंसर को प्रिंट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आंसर को। ओके, सो दैट हमको इसका आउटपुट मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द लॉजिक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स ट्राई टू राइट द कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, so first what I can do here, first I have to take the inputs. For that I will write the scanner class, scanner sc equals to new scanner, then system dot in। ओके, स्कैनर क्लास हमने लिखा, अभी ये दो नंबर्स हमें यूजर से इनपुट लेना है, दैट इज n एंड k। ओके, सो फॉर दैट यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे यूजर से ये किया, अभी सेकेंड नंबर विच इज के इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, सो यहाँ पे दो नंबर हमने यूजर से इनपुट ले लिया, अभी क्या करेंगे, एक एरे को डिक्लेयर करेंगे हम। सो यहाँ पे लेट सपोज लॉन्ग एरे इक्वल्स टू न्यू long, and inside this I'll pass the size for this array, that is n। Okay, after that what I can do, I'll write the for loop for this array, and we'll write integer I equals to 0, then I is
लेस देन एन आई प्लस प्लस। ओके, ये फॉर लूप यहाँ पे हमने लिखा। इस फॉर लूप में अभी क्या करेंगे हम, एरे के एलिमेंट्स को इनपुट कराएंगे। सो एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये हो गया। नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लेट्स सपोज लॉन्ग आंसर इक्वल्स टू लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ओके, सो एक मैक्स वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे अभी। ओके, एंड इनसाइड दिस फॉर लूप I'll write integer I equals to 0, then I less than n minus k. Okay, and I plus plus. After that, okay, after that, inside this for loop, what I can do, simply I will write all the functions inside this temp only, instead of calculating or writing the or declaring new variable and store the result in separate variable for the every function. What we can do, मैं सब जो भी फंक्शंस है, दैट इज जो हमने डिस्कस किए थे मैथ डॉट एबीएस के, वो सभी इसी एक ही मतलब वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, और उस सबको इस एक ही इसमें मैं फाइंड कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लॉन्ग टेम्प इक्वल्स टू। ओके, सो फर्स्ट हमें लास्ट में हमें क्या किया था, मैथ मिनिमम वैल्यू निकाली थी। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैथ डॉट मिनिमम कर दूंगा। ओके, एंड इनसाइड दिस उसके उससे पहले हमने क्या किया था, एबीएस वैल्यू निकाली थी, एबीएस वन और एबीएस टू फंक्शंस में से। ओके, सो instead of creating these two variables, that is abs1 and abs2, I'll directly pass this inside this math dot minimum function. So here I'll write math dot abs. Okay, and inside this, what I can do, I'll write array of I. Okay, comma array of I comma, यहाँ पे और एक मैथ डॉट मिनिमम फंक्शन, जो कि फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, मैथ डॉट मिनिमम। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एरे है, एरे ऑफ आई प्लस के माइनस वन कर देंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं, पहले हमने ये डिस्कस किया था, सॉरी यहाँ पे मैथ डॉट मिनिमम नहीं, यहाँ पे भी मैथ डॉट एबीएस वैल्यू ही निकलती। ओके, सो हमने डिस्कस किया था, पहले हम मैथ डॉट एबीएस एबीएस वैल्यू निकालेंगे, दैट इज, और उसको हमने एबीएस वन में स्टोर किया था। ओके, देन हमने सेकंड एबीएस फंक्शन लिखा था, उसमें हमने जो एरे के एलिमेंट्स है उसमें से, और जो इसका रिजल्ट है, दैट इज एबीएस वन फंक्शन, उसमें से एबीएस वैल्यू रिटर्न की थी, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट मींस पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न की थी। और बाद में इसमें से हमने क्या किया था, मिनिमम वैल्यू को फाइंड किया था। ओके, math dot abs xi, that is array of I comma math dot abs array of I plus k minus 1. Okay, now what I can do, after writing this, I'll add the temp, result of temp into here as well, and again I'll find the math dot abs. Okay, and array of I minus array of I plus k minus 1. Okay, plus look, okay, minus 1. Okay, now array of I minus array of I plus k minus 1. ओके, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, इफ जो आंसर है, दैट मीन्स जो मैक्स वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर है टेम्प वैल्यू से,
ओके, देन सिंपली हम क्या करेंगे, temp को आंसर में स्टोर कर देंगे. सो सिंपली हियर आई विल राइट आंसर इक्वल्स टू temp. Okay, okay, and now here I'll print the answer. So I'll write system.out.println, and inside this I'll print answer. Okay, so we have written the code. Now what I can do, I'll just copy this and let's paste it in input, and let's see whether this approach works or not. So click on run. Okay, now let's see. Okay, so error, let's see. Math.abs, no suitable method found for abs long comma long. Uh, list differs in length. Actual formal argument. Okay, long answer equals to long dot max value. Okay, then I equals to 0, then I is less than n minus k. Okay, here I think here we made the mistake. We have to write here that is n minus k plus 1. Okay, so now let's check. Now I think it should work. Okay, again it shows an error. Let's check again. Okay, long temp equals to math dot minimum math dot abs array of I. And okay, here we have to find the abs value for this array of I first. Okay, for that we have to close this bracket here only. Okay, so we haven't closed this bracket here, that is here. Okay, so now it is correct. And then we have to write math.abs array of I plus k minus 1. Okay, and this one extra bracket I need to remove it. Okay, now let's see. Now it should work, I think. Click on run. Okay, now it works. So this is the only reason. No, that is why our code is not running. Okay, so output is 40 and required output is as well 40, which is correct. Okay, so this is the reason for that is why our code not working properly. Okay, now let's try for this second sample input. So I'll just copy this and let's paste it here. Let's click on run. Output for this should be 10. Let's see. Okay, you can see that output is 10. Okay, which is now let's try to submit the code and let's see whether all the test cases will pass or not. So click on submit, and now here you can see that the test cases are running. Okay, so here you can see that all the test cases has been passed. Okay, so this is the logic, or this is the code for this problem. Okay, okay, so that's it in this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.